Hello bachcho, let's see the question. The question is find out the number of moles of constituted by 1.4 gram of carbon monoxide. The formula for it is given as number of moles is equal to weight divided by gram molecular weight. तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 1.4 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड का कितने मोल्स होता है. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट. तो बच्चों एज गिवन इन द फॉर्मूला कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है दैट इज इक्वल टू द वेट, दैट इज द गिवन वेट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास. एम से रिप्रेजेंट करेंगे. सो इस केस में अगर हम देखें वी हैव द गिवन वेट जो यहाँ पे है दैट इज W for, that is the given weight for carbon monoxide is equal to 1.4 grams. ठीक है. सो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है M for carbon monoxide will be equal to, it is basically equal to 28 grams. So it implies जो number of moles होगा that will be equal to 1.4 divided by 28 grams. Okay, gram and gram cancel out. So यहाँ पे जो number of moles निकलेगा that will be equal to, calculating this will be getting 0.05 moles. ठीक है. So that means कि 1.54 grams of carbon monoxide is equal to 0.05 moles. Clear? So this is the final answer to the question. Hope you understood it well. Best of luck.